Great. Welcome, guys. Welcome to today's open discussion on the topic self-worth, self-esteem, and our core beliefs. So, we are going to explore how our self-worth, self-esteem, self-image is interlinked with our belief system, how our belief system creates our self-worth, and what we think about ourselves, how we perceive ourselves, and later on going forward in our lives, how it starts impacting our lives at a greater um, picture, from a bigger picture. So, how it impacts our relationships and our career, our family life, our personal life, professional life, all the different aspects. So, basically, if we talk about our self worth or self esteem, then it simply means that how we see ourselves, how we value ourselves, how we look at ourselves or perceive ourselves, right? It's like we're talking about the image that we have, the identity that we have about ourselves, and how much we find it valuable, respectful, worthy. And when it comes to belief systems, is it's basically a set of uh, beliefs that we have about how we see things, how we see ourselves, and how we see the world. So that's a little bit about how we can, describe or define these two different things. Now, when we talk about our belief system, so it includes the conscious and the subconscious mind, of course. However, when it comes to how much of our belief systems we use when it comes to our behavior and the choices and the decisions that we make in our life, the conscious mind plays um, a very less small percentage of role in determining our behavior when we are, of course, operating in an autopilot mode, while it's the subconscious mind, which is the larger mind, which is the greater mind, where we just end up making the same decisions, the same choices, the same taking the same actions in our day-to-day life. So if you observe yourself or a lot of people around you, we see that every next day or every present day we end up doing usually the same kind of spending the same kind of uh, time, this doing the same kind of things, behaving in the same way, doing things in the same way, perceiving things in the same way, right? So a lot of things from our day to day life just get carried forward in an autopilot mode without even us realizing that how we are doing the same things over and over again, right? So that's how our belief system continues to go forward until and unless we consciously become aware and we not only change things at the level of logic or reasoning, because that's not going to truly bring a lot of impact. As I said, that most of our behavior gets impacted by the subconscious mind. So the work has to be done in a way where it goes to a deeper part of us, a core part of us, a core part of our belief system, which is the subconscious. And thus, while working with that, we need to see that we also change our self-worth and self-esteem, self-image at that level. Because even if we consciously somehow say that, okay, from today I pick up this belief that, okay, now I have high self-esteem, I have low self, I have, low self-esteem, no such low self-esteem issues which I had been having in the past. I have high self-worth. I think of myself this way or that way. But the moment something comes up, first of all, it becomes very hard for us to believe those sentences, just plain white sentences. Secondly, even if somehow we, tell ourselves that I believe it, until and unless it penetrates and becomes that part of our deeper nature, it's not going to bring a lot of shift to you know the habit pattern and the way we spend our lives. So these two are very deeply intricately interconnected with each other, that how our belief system determines our self-worth, while our self-worth tells us the kind of belief system that we have.
So that's just a little bit of brief about how these two things are interconnected. And going forward in today's call, we will go deeper and explore that in what ways we can, um, you know, bring a shift in our self-worth or self-esteem issues. But before we can do that, we will also explore in today's call that what are the things which stop us from doing the same. What are the things which are hidden beneath the different layers where we actually get stuck and we fall into the same patterns of, beating ourselves up or telling ourselves that you cannot do it, you're not good enough, so on and so forth. Okay, so now whatever I have been speaking, I would like to know from you guys as well that does this resonate with you? Have you um, observe this thing in your personal experience that your belief system is determining your self-worth and vice versa? How are these things playing out in your life? Anything anybody would like to share in this context? I would like to share, hi everyone, I would like to share the things that used to happen in my childhood with the comparing of the marks. So, my mom always used to compare my marks with someone who's uh, definitely more than me. And it will happen in relatives, friends, in the mohalla, in the building, in the society, everywhere. So, the common topic for her, and I don't, she used to try some juice out of it. Uh, पहले तो देयर विल बी अ ड्रामा शो, चलो ये पोएट्री बोल के बताओ, ये गाना करके बताओ, ये डांस करके बताओ, एंड हम भी करते थे। एंड देन जैसे ही मार्क्स की बात आती थी, व्हेन शी विल कंपेयर, तो फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड तक मुझे बड़ा बुरा लगता था। और मैं कोशिश भी करती थी ना, देयर वर सम सब्जेक्ट जहाँ मैं स्कोर नहीं कर पाती थी एंड सम सब्जेक्ट मैं स्कोर करती थी। But there was Hmm, a reason also behind for me not to score, because I was not a dumb child, dumb student. Uh, there were two reasons कि when I was in standard fourth, मेरी छोटी बहन है and my mom is a school teacher in the same school. तो वो आफ्टरनून शिफ्ट जाती थी एंड आई हैड मॉर्निंग शिफ्ट, तो वो पूरा 3-4 घंटा द एक्टिव आवर्स मैं मेरी बहन को संभालती थी। उनकी मैटरनिटी लीव के बाद जो भी 6 मंथ्स की हुई थी, तो मेरा माई hmm, एंटायर एनर्जी वॉज गोइंग टू फीड हर, मेक सेरेलैक, चेक हर पॉटी, डायपर, एंड इवनिंग बाय द टाइम मॉम यूज्ड टू कम बैक, मैं थक जाती थी। फिर दैट 1-2 घंटे में जितनी पढ़ाई होती थी, आई कुड जस्ट फिनिश होमवर्क, उतना, नो एक्स्ट्रा स्टडी। बट ये लॉजिक तब नहीं लगा, बाद में। तो एनीवेज मॉम कंपेयर करती थी स्कूल में क्या चल रहा है, दो जासूस बिठाए थे, तो एवरी डे 7:30 दो लड़के आते थे, मेरी क्लास के दो लड़के आके, आज टीचर ने इसे मारा, इसे क्लास के बाहर कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। On the other side, I was very good in extracurricular activities, poetry competition, dance competition. I had got a lot of awards for the school, elocution competition, this, that, and I used to enjoy that. तो फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड तक मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। एंड आई यूज्ड टू फील, ओ मैं कितनी डम हूँ। मैथ्स वाज द एरिया जो मुझे बहुत स्केयर था। एक्चुअली आई डिडंट गेट अ गुड मैथ टीचर। मैथ्स मतलब हमेशा क्या होता था, व्हेन आई वाज लर्निंग बोरोइंग सब्सट्रैक्शन, सिंपल मैथ, तो वो hmm, समझने के लिए टाइम जा रहा था मुझे। सिंपल सब्सट्रैक्शन तो आ रहा था, 4 - 3 1, लेकिन अगर 40 - 38 है तो वो जीरो को 10 कंसिडर करना, ये समझ के ही बाहर था मेरे। और hmm, hmm, वो हो ये रहा था कि रादर देन समझाओ मुझे, मुझे बेलन से फटके पड़ते थे उल्टे हाथ पे कि तुमको इतना नहीं आता। तो आई डेवलप सो मच फियर। सारे सब्जेक्ट हो जाते थे, बस जब मैथ्स होता था ना, तो मतलब भाग जाऊं, कहीं छुप जाऊं खाट के नीचे। और घर पे दो केन, बाम्बू केन्स होते थे ना, वैसे दो केन्स डैड खरीद कर लाए थे, वन फॉर मैथ्स एंड वन फॉर hmm, मथ। तो वो खुद ही बोलते थे, सो यू डिड दिस रॉन्ग, ये सम तुमने रॉन्ग किया, जाओ तुम, यू नो विच केन यू हैव टू ब्रेक। बे, बेशर्म की तरह मैं ही जाती थी, मैथ्स वाला केन लाती थी, तो मैथ्स वाला केन के नीचे ग्रीन कलर का रबर बैंड टाई होता था, जो हैंडल है, और मस्ती के लिए रेड वाला, तो आई विल पिक द ग्रीन वाला और आओ मुझे मारो, और पूरे बदन में दाग 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 होते थे केन के मार। तो आई डेवलप फियर। ये तो ये काफी मैंने सहा, मतलब
And then I started thinking कि मतलब math, I will never understand math and comparison. No, I am not good. Then I did not think कि I used to get awards for the school also. वो सब में तो मॉम को बहुत अच्छा लगता था to flaunt me. फिर 7th स्टैंडर्ड मैंने ऐसे मतलब मैंने ऐसे सोचा अगर मैं 7th स्टैंडर्ड के किसी यूनिट टेस्ट में फर्स्ट आ भी गई तो हाउ एम आई गोइंग टू शोकेस दैट लेटर, कौन याद रखेगा. So then I just gave up. तुमको बोलना है बोलो, मारना है मारो. आई बिकेम सो ये कंपेयर करना है करो. हाँ मुझे इतने ही आई जस्ट यूज टू एंश्योर कि 100 में मुझे 50 से 60 मार्क्स मिल जाए. मुझे कोई 75 नहीं लाना है, कोई 85 नहीं लाना है, बिकॉज माई मॉम विल नेवर बी हैप्पी. अगर मैं 99 भी लाऊं तो शी विल क्रिप की तो 100 क्यों नहीं लाई. तो आई गेव अप. मेरे से जो बोलना है बोलो. मैं बुद्धू हूँ, बेवकूफ हूँ, इडियट हूँ, जो भी हूँ, स्टूपिड हूँ. गो एंड टेल द एंटायर वर्ल्ड, पुट इट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया का हेडलाइन. मैं अपने दुनिया में खुश हूँ. तो ये मेरे चाइल्डहुड में ऐसा था. मैं मार भी खाती थी और उस मार का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था. हाँ एक दो बार मैं फेल भी हो गई मैथ में और फिर 10th स्टैंडर्ड में मुझे बहुत टेंशन आया कि अरे बाबा मैं पास भी होंगी क्या मैथ में. बट भगवान की दया से मैं हो गई. थैंक यू. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट मौसमी. इसमें वो वाली जो बात आपने बताई कि यू आई मीन ये आपके ऊपर चेक रखना दैट वेदर यू आर स्टडीइंग और नॉट स्टडीइंग, सो डिड दैट डेवलप अ काइंड ऑफ fear that you are not being trusted for what you're doing as a child? हाँ माई मॉम कैप्रिकॉन बॉर्न, तो उन्हें सच कितना भी बोलो टिल डेट, उन्हें सच कितना भी बोलो वो अपना ही लॉजिक लगाती है. तो इनिशियली मुझे बहुत ये होता था कि घर के लोगों के अलावा शी वाज ट्रस्टिंग अदर्स, द टीचर्स, द बाइज, द हाउस कीपिंग स्टाफ. किसी ने कह दिया कि आपकी बेटी उस गली में थी तो बस पहले धूमधाम धाम पड़ेंगे मुझ पे और फिर पूछा जाएगा कि तू उस गली में क्यों गई. तो ट्रस्ट इश्यूज का तो बहुत ही पंगा था. फिर क्या बाद में मैंने एक अच्छा टैलेंट भी सीख लिया झूठ बोलने का. तो मेरा ऐसा था जो भी खबर देना जाके बोल, मैं इधर हूँ आप बोल. तो ऐसा था. वो दो लड़के आते थे बोलने के लिए. पर आज जब मैं मॉम को ये सब बोलती हूँ ना दैट यू डिड दिस विथ मी इन चाइल्डहुड एंड दोस हैव लेफ्ट स्कार्स इन माय हार्ट, वो मुकर जाती इतना साफ कि आई नेवर डिड दिस, यू आर मेकिंग अप स्टोरी. तो देन मेरा ऐसा छोड़ा, संडे भी नहीं करने. बट मतलब आई बिकेम सो राइनोसेरस स्किन बाद में. लाइक ये जो सेल्फ वर्थ वाली बात होती है हो रही है कि अर्लियर तो मेरे माइंड में ऐसा था कि आई एम गुड फॉर नथिंग. उसके बाद हाँ 10th में ऐसा भी हुआ था कि मैंने कुछ पिल्स खा लिया. आई वांटेड टू एंड माय लाइफ कि मैं तो किसी काम की नहीं हूँ. आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट फिट फॉर एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं आता. बहुत बहुत मतलब तब मेरा लो 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 चल रहा था. एंड मतलब डेली घर में मार पड़ते थे और डेली गालियां पड़ती थी मुझे पढ़ाई के लिए 9th और 10th स्टैंडर्ड में. तो आई वाज थिंकिंग कि बस अब लाइफ खत्म ही करनी है. फिर मैंने कुछ पिल्स खा लिए एंड नेक्स्ट डे आई वोक अप. मैंने बोला अरे मैं तो मरी भी नहीं यार, इसमें भी अनसक्सेसफुल हूँ मैं. तो थोड़े दिन के बाद मुझे पता चला माय मॉम सॉ मी टेकिंग दोस पिल्स एंड शी सेड आई नो यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग. तो मैंने बोला आपने रोका नहीं. तो मॉम बोली पहले तू बीमार तो पड़, तू मतलब यू यू नो यू शो समथिंग दैट यू आर वॉमिटिंग और डू समथिंग, तब मैं तुझे बताती. और तब मैं देख मतलब आई वुड हैव एंश्योर्ड कि तुझे टफ ट्रीटमेंट मिले, द मोर ऑफ इंजेक्शन एंड ऑल दो थिंग्स, सो यू विल अंडरस्टैंड टेकिंग लाइफ इज नॉट इजी, इट इज नॉट द राइट थिंग. तो फिर अराउंड 15 days आई वॉज वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड कि इनको तो फर्क भी नहीं पड़ता मैं जीऊँ मरूँ. फिर मैंने देन आई थॉट कि मरना भी नहीं है, मरना भी क्या. तो देन मैंने खुद से ही अपना एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाया वेयर आई हैड अ परफेक्ट मॉम, अ परफेक्ट डैड, अ परफेक्ट टीचर, और मैं उसमें खुश रहती थी. तो ये मेरा स्टैंड बाई वो. एंड दिस इमेजिनरी थिंग आज भी है मेरे साथ. तो इनफैक्ट कभी ऑफिस में कुछ ऐसा हो जाता है जैसे नमिता ने शेयर किया समटाइम्स मेरे साथ भी. So I go in that imaginary world, that dream world where I have a utopian society, good office,
everything is perfect, and I feel happy. Hmm. Hmm. Okay. Okay. Right. Thank you. Thank you for sharing that, Marshall. Hmm. So a lot of our belief system is shaped by our childhood experiences only, right? What we have heard in our childhood, and when we are told that this much marks is not good enough, this much doing this is not good enough, you are dumb, you are stupid, you cannot handle this, you cannot do that, or be extremely cautious, be extremely careful. So usually we don't hear parents actually telling us that, okay, you're going out, you're doing, take risk, right? Nobody tells us that go out, take risk, learn something new. Everybody tells us that, oh, take enough care, be enough cautious, anything can go wrong, which creates a perception at a deeper level that the world is not a good place, first of all, and secondly, we are not capable enough to handle it. So we grow up most people grow up with this kind of a belief system that I won't be able to handle it and anything can go wrong at any point of time, so we need to be extra fearful, extra insecure, extra cautious, so that nothing ever goes wrong. We have to make sure that there are no we are risk mitigated all the time, right? So we tend to not take risks a lot of times in relationships, at work, in career, in businesses, in doing things that we really want to do, take stand for ourselves, expressing ourselves, communicating clearly, and so on and so forth. So different kind of uh, beliefs that we create for ourselves. And when we are kids, it's it's like we have more of the subconscious mind, the felt perception side of us, which is more active. So जब हम छोटे होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, तो चीजें ज्यादा अंदर तक जाती हैं. I don't know if you guys remember how much of your childhood you guys remember, but जब हम छोटे होते हैं तो चीजें बहुत चुभती हैं, चीजें बहुत फील होती हैं, बिकॉज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा जो फीलिंग वाला पार्ट होता है दैट इज मोर स्ट्रांग, right? We tend to cry, we tend to feel overwhelmed, but over a period of time, as we grow up, as we go forward in our lives, it's the rational, the logical, that the conscious mind which comes into picture, and which tells us all the fears that we create over a period of time are basically our defense mechanisms, which tell us that you know live with this fear, hold on to this fear, be it fear of failure, be it fear of success, be it fear of dying, be it fear of living, be it fear of being in relationships, be it fearing being alone, any of these sides, any of these fears that we have, which look opposite um, when we talk about them, because the fear of living and fear of dying may appear different, but the point is that both of them are fears because they were fed on to us that way. So we try to somehow be in the middle and mitigate these things, but we are neither living enough, neither getting into the relationships, nor we are being alone. We are in the middle, somehow trying to find the ground key, we don't fall into that risky position again in life. So we tend to hold on to those fears, and they become a major part of our belief system, right? Because um, uh, um, these subconscious limiting belief systems that we create for ourselves, um, the fears that we have. So ऐसे तो हम किसी से भी पूछेंगे तो सब यही बोलेंगे कि fear, we should be fearless, we should let go of the fear, but at the end the whole point is that we hold on to them because they are trying to protect us from something, right? Something that could go on, something that could go wrong in our lives, and we continue to be in our comfort zone and play small so that you know we don't fall
in the trap of getting hurt. But then at the same point of time, we don't grow in our lives. We feel that our growth is stunned. We are not doing enough. We are not achieving enough, like that. So kind of, being stuck in that loop. Hmm. So thank you, Mashmi, for giving some examples of, how the belief system that could include comparison, that could include competition in unhealthy way, that could include trust issues, that could include, that feeling that I'm not trusted enough or I'm not good enough to do all of these things. And yeah, those are few of the examples. How about others? Can you guys remember that how your self-image was created? What were the things which were put onto your belief system that created your self-worth? Uh, is there anybody who here who was told that um, you're worthy if you achieve things? Your self-worth is defined by what you achieve in life, and you're only worthy if you earn it. You have to earn it somehow to, prove your worth. Yeah. Ma'am, not explicitly told, but I've seen the from behavior of even loved ones and family members and friends that till the time I was successful and everything was going well in relationships or even in office, everything was fine. But once even in college, if you flunk a exam or even if teacher scolds you or something, so every you will be looked down upon. So yeah, so self-worth is measured unfortunately in our society by the how much you are doing well career wise or materialistically, or you might be a shitty person. I've seen very very shitty people at very high posts, and I have known their career path, how they have um, been in their personal life or been with their colleagues. But that is all good because they were able to achieve success at the end of the day, and that is what matters, and people will still go to them because that's how they will get the favor, and even in office. So yeah, it unfortunately that's how it is in our world. Hmm. Hmm. But what do you believe? What is So your I to belief stay about away. it? For me, it's as important as success is important, but how you achieve it is also important. If you are good at what you do but you don't respect people, you don't have a empathetic heart. So I might be I might be, these are Ratan Tata's words, that I might be able to appreciate you but I won't be able to respect you. So it's very important to be, and we have successful people who are very very empathetic, doing a lot for the society, and they are successful as well. So I would rather follow their example than seeing people around me who have done taken wrong paths to achieve success, or used others as ladders to go to the top. So yeah. Hmm. Hmm. Right. Okay. Lata, your hand is up. You want to say anything? Yeah, Namika, thanks. Yeah, I just wanted to add on that one. See, I usually do not, others' view doesn't affect me much, but it's mostly what I believe or what I have, got my picture created for myself, basis my actions. So, what I, mostly have been doing or has been happening, that whenever I am taking some task, I'm not able to complete it, right? So be it some, some course, if some 21 days course is there, I'll just drop it. If I sign into something, I'll just, 1 or 2 days I'll go and then drop it. If I'm registering for an exam or something, I'll stop studying for it. And mostly written exams, I flunk. So I know my caliber is there. I mean, I can excel for it, but I don't know, that has created the impression. I've tried millions of times to remove that impression and keep on trying, but every time I give up.
I gave up on myself. Even I keep Hmm. saying to my husband that सबसे बड़ा दुश्मन मेरा मैं खुद ही हूँ, क्योंकि मेरा विल पावर इज सो वीक कि मैं या इतना आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट इट, और बुरी चीजों में जो मुझे नहीं करनी चाहिए, मुझे पता है नहीं करनी है, बट मैं खुद की भी नहीं सुनती हूँ। तो जहाँ पे करना है वहां नहीं करती हूँ, जो नहीं करना है वही करती हूँ। सो आई एम इन दैट loop, uh, which I am trying to break for years and years, in which I have that willpower to break it and move out, trying multiple things. Like this time, I'll be able to do it. I'll listen to myself, or I'll be on the correct path to complete it. But then, other part of mine, the devil part would say, or the negative one would, just take over, and I'll drop that thing in between. I don't know why it happens all the time. Hmm. Hmm. Right. What, but what would happen if you finish those courses or whatever you're doing? Of course, that will increase my confidence in myself, no? But that has never happened. I mean, I have tried to break that pattern. Like some small thing, I'll do it, and from this, I will change my thinking towards myself or my belief that I am able to complete it. But I won't do it until and unless if it is decided by me, I'm not doing it. But if someone else assigned it to me, I'm definitely doing it. If my boss assigns me something, I'll right away do it, right away. I mean, he might get that delayed from other folks and all, but I'll definitely, if before the timeline, I'll submit my whatever the task is given. But if something is decided by me, I am not doing it for sure. So unless and until someone external pressure is there, or someone who is continuously asking me to do it, for some time they'll try, but later on they'll also give up. So I'll again come back to my same pattern of giving up. Hmm. Hmm. Right. Right. And what could be a possible benefit of giving up? Um, benefit benefit is, maybe I'm lazy. I don't want to uh, continue for it, be it a yoga class or be it some course or skill which I want to learn, which will help me, which is being asked for doing or something like that. So but after initial का जो होता है कि हाँ चलो करते हैं, कुछ नया करते हैं, this will be good, and after 2-3 दिन के बाद सब down. So ये जो this has created lots of inferiority in myself कि no, cannot do it. So these days I've stopped registering anywhere, doing anything, because I know even if I pay for some courses, I'm not going to follow what the person is saying, or will be able to complete it, or will even go for the classes. Hmm. Hmm. So आप ये नहीं कर पाते हो इसके लिए inferior feel करते हो या इसलिए नहीं करते हो क्योंकि inferior feel करते हो? I think it is both. I mean, one thing is happening due to the other, and then other is happening due to the one. So it's complete loop. हम्म, राइट राइट बट इंफीरियर फील करने के भी जैसे आई वाज टेलिंग सम टाइम बैक कि हमारे जितने भी सारे फियर्स हैं वो उन फियर्स का सिंपल सा ये मतलब है दैट दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अस इन सम और द अदर वे राइट कि जैसे कि फॉर एन एग्जांपल पैराग्लाइडिंग ठीक है वो पैराग्लाइडिंग इज समथिंग मे बी अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग बट देन my fear tells me that don't do it it's risky it's this and it's that so my fear is trying to protect me कि मैं अगर पैराग्लाइडिंग पे जाऊंगी और मैं गिर गई और मैं मर गई तो so fear is basically a protective mechanism a defense mechanism तो ये जो inferiority complex है this is also a kind of fear तो
ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का क्या बेनिफिट हो सकता है? I don't know. What are you trying to protect yourself from? I haven't thought about it. Nothing comes into my mind for not doing it or doing it. It's just I feel like not doing it at all. There is you know, there is no kind of emotion or anything that is stopping me. It's just I don't want to do it. I mean, क्या ही हो जाएगा, यहाँ नहीं करते हैं, छोड़ो, बहुत हो गया. So these are the thought that I get. हाँ हाँ, इसके अच्छा ऊपर I अच्छा don't. सेंटेंस था वो वाला जो आपने बोला कि क्या ही हो जाएगा ये करके भी. हम्म, yeah, you continue. Yeah, so I think I said it myself. क्या ही हो जाएगा? So I think कि कुछ नहीं होगा इससे. और हो सकता है 2-3 क्लासेस और हो जाए, बट आगे जाने के बाद कुछ नहीं होना is what I believe in maybe. Yeah, maybe it is a long journey, or suppose it's a yoga, so I know it is a lifelong thing, or intermittent fasting for health wise, I'm saying, for learning the skill, like, it is a everyday thing to learn something new. So, to go forever. So it's like I feel कि चलो छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है इससे भी. या कोई न्यू टेक्नोलॉजी है, सो इफ आई स्टार्ट समथिंग, आई नो कि यार अभी ये चली जाएगी वापस, क्या फर्क पड़ेगा, फिर से कुछ नया आ जाएगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो इट्स बेटर छोड़ दो. राइट, तो कुछ होने वाला तो नहीं है. ऐसे भी तो कर इतनी मेहनत करने का मतलब ही क्या है? हम्म, और क्या बेनिफिट हो सकता है? मे बी लेजीनेस कुड बी द वन, आई फील कि क्यों ही करना है, जाने दो. आई डोंट नो, आई और मे बी गोइंग बैक टू द सेम पैटर्न ऑफ नॉट डूइंग इट. कंफर्ट जोन है एक, कि जब नहीं कर रहे थे तब वैसे ही वाले में वापस से लूप में चले जाओ कि छोड़ो. तो आई थिंक वो वापस उसी लूप में चला जाता है कि नहीं करने वाले पे, एक कंफर्ट जोन जो है. It allows you, helps you to be in your comfort zone. या या राइट, तो फिर ठीक है, तो फिर जो आप अचीव करना चाहते थे वो तो अचीव हो रहा है. यू कैन बी इन योर कंफर्ट जोन. You can keep, continue to live this way, living in your comfort zone, not trying anything new, not finishing anything, not taking chances, not completing anything, not learning anything. कुछ फिर करने की प्रॉब्लम ही नहीं है कोई यहाँ पे. जरूरत ही नहीं है फिर कुछ करने की. Can you be happy with that? I don't know. That's what I mean. That is impacting my self-worth, and that is definitely impacting my confidence level as well. So, yeah. Hmm. राइट, सो वैसे तो इसके और भी बेनिफिट्स होंगे कि द रीजन व्हाई वी होल्ड ऑन टू दीज थिंग्स सो टाइट. और और कुछ, कोई एक आध पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, नहीं. बीइंग इन योर कंफर्ट जोन? Uh, ओके, ओके, ठीक है. So now the question comes that if this is impacting your self-worth and your confidence levels and how you view yourself, you view your life, that is
that doesn't feel like a good enough reason to do something about it? No, I'm asking you, Lata. Sorry, I missed that, Namika. What is it? I'm saying that if you're aware that this is impacting your self-worth and your confidence levels and everything, so that Hmm. does not feel like a good enough reason for you to do something about it. That is what I keep on trying to come out of that loop. It's like zillion times I have tried. I'll keep on trying. I don't give up on myself. I keep on trying, but every time, I think last month as well, I enrolled myself. Some feedback was given by my manager, so I thought, okay, चलो ठीक है, इसको improve करते हैं. So I enroll, but I can see कि I'm not even doing it. मतलब enroll होने के बाद I don't take further actions to it. So Hmm. it's a loop. Even if I take one step just for enrolling, finding things कि हाँ चलो ये सीखते हैं वो लेवल के आने के बाद then once I वहाँ पे जाने के बाद then again जहाँ पे actually में action लेना चाहिए I'm not taking it. Hmm. Hmm. क्योंकि क्या ही हो जाएगा. Yeah, yeah. Hmm. So मैंने बोला ना कि खुद की दुश्मन मैं खुद ही हूँ कि I just give up on myself. Hmm. Now the question comes, what is the benefit? I mean, how should I say? You're not finding any answer to that, no? I want to ask कि ये सब क्लैरिटी होने के बाद फिर आप स्टार्ट ही क्यों करते हो कुछ? यही सोच के कि शायद इस बार शायद कर ले, ये शायद कर लिया जाएगा, शायद इसमें मेरा पैटर्न चेंज हो जाएगा, शायद ये चीज से मैं एक बार जस्ट वन थिंग इफ आई विल फिनिश इट फॉर माई सेल्फ मे बी नेक्स्ट टाइम से आई विल बी अ फिनिशर एंड नॉट अ क्विटर. सो ये एक होप इज व्हाट आई कीप ऑन थिंकिंग कि चलो इस बार आई डू दिस वन मे बी पर शायद ये कोर्स करने के ये बाद. ये ये होप है या ये डिल्यूजन है? आई थिंक इट्स होप होप. कैसे? जिलियन टाइम्स तो आपने बोला कि जिलियन टाइम्स आई हैव डन दिस, तो जिलियन इज अ बिग नंबर, तो हाउ इज दैट स्टिल अ होप? हाउ इज दिस नॉट अ डिल्यूजन? ये तो ऐसा हो गया कि जैसे मेरे पास मैं तराजू पे कुछ तोल रहा हूँ और कोई मुझसे कुछ 1 किलो मांग रहा है और मेरे पास आधा किलो का ही बाट है, और मैं हर बार आधा किलो से 1 किलो मेजर करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड एवरी टाइम आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड एंड बैड, और ये सोच रहा हूँ कि इस बार हो जाएगा. I agree, Karma. I've done all the self-talk, everything, but I don't know what is. Every time I give up on myself, have done lots and lots of self-talk with myself. कि I should be continuing. ठीक है, one day is missed, 2 days are missed. ठीक है, third day I should get back on the track and let's do it. But तो maybe ये होप तो two, नहीं three हुई ना times I'll फिर, try. क्योंकि सेम चीज को Hmm. आपने एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, 10 बार कर लिया, 50 बार कर लिया, सेम ही चीज को किए जा रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हाउ इज दिस होप? मेरे को होप नहीं समझ में आया ये. हाँ, मैं कुछ अलग ट्राई करूं तो आई कैन अंडरस्टैंड कि मैंने पहली बार ये ट्राई किया, ये नहीं हुआ, मैंने अब दूसरी बार कुछ और ट्राई किया, तीसरी बार कुछ और ट्राई किया, हर बार मैं कुछ अलग ट्राई कर रहा हूँ, देन आई विल बाय द वर्ड होप देयर. इस बार कुछ नया कर रहा हूँ तो आई होप कि इस बार वर्क हो जाए, आई विल देन गो विद द वर्ड होप. Yeah, every पर time आपका अलग तो अलग अलग पैटर्न चीज है. आपका Every time पैटर्न I'm तो सेम trying है. new things. Maybe I'm trying यू आर new things ट्राइंग only. न्यू न्यू Hmm. थिंग्स, वो छोड़ दो, वो तो कंटेंट की बात है. मैं तो पैटर्न की बात कर रहा हूँ, पैटर्न तो सेम है, यू जस्ट स्टार्ट एंड यू स्टॉप. तो स्टार्ट और स्टॉप वाला पैटर्न तो सेम है ना, यू आर नॉट कमिटिंग Yeah, टू इट एंड नॉट सीइंग थ्रू. तो मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, आप कंटेंट को yeah. छोड़ दो कि व्हाट इज इट अबाउट, वो नया होगा. ये तो जैसे मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपके पास आधा किलो का बाट है और आपको 1 किलो तौलना है, तो कभी आप गोभी रख रहे हो, कभी बैंगन रख रहे हो, कभी गाजर रख रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ता है?
True, So true. how is that any and different things on the other side going to make any difference? And you hope कि गोभी तो 1 किलो मेजर नहीं हुई, शायद बैंगन हो जाएंगे, शायद पालक हो जाएगी, शायद मटर हो जाएंगे 1 किलो. But so you keep saying it, but I'm trying different things. I'm trying new sabzi every time. That doesn't make any sense. Yeah, true. आपका मेथड सेम ही है हर चीज में. तो उसको तो मेरे को होप नहीं वर्ड समझ में आ रहा है यहाँ पे. मेरे को तो डिल्यूजन ही समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको ये करते हुए कोई देखेगा तो यही सोचेगा कि ये क्या चल रहा है. Hmm. शायद आप ही किसी को करते हुए देखोगे और वो आपके सामने ही ऐसा बार बार तोलेगा और बोलेगा, और आप ही फ्रस्ट्रेट होकर बोलोगे ये क्या लगा रखा है. एंड if that person will say, but this time I am really hoping, आम डाल के देखो शायद 1 किलो हो जाए, सेब डाल के देखो शायद 1 किलो हो जाए, इस टाइम आई एम रियली होपफुल. तो आपको ऑड नहीं लगेगा? Yeah, it is मतलब odd. It मुझे तो is लग odd. रहा है. हम्म. Yeah, it is odd. I'm telling you, na, I know it is odd. हाँ, तो फिर कहाँ अटके हो? तो वही तो, पहले तो ये देखो ना. तो आप ये बोल रहे हो कि आई हैव ट्राइड many times and all that, but I can only see that the only thing that you have tried is one way, done hundreds and zillions of time, and hoping कि इस बार रिजल्ट डिफरेंट हो जाए. कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये तो होगा नहीं, ये तो होने वाला नहीं है, लेकिन आप अगर ये फिर भी किए जा रहे हो, तो एक नेचुरल क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आएगा उस टाइम पे आपसे ये पूछने के लिए, अगर मेरे सामने आप इस ये जो मैं फिजिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर ये आप किए जा रहे हो और फ्रस्ट्रेट हुए जा रहे हो, तो मेरे दिमाग में एक पहला क्वेश्चन ये आएगा कि आप प्रिटेंड क्यों कर रहे हो कि आधे किलो से आप 1 किलो तोल लोगे? आप स्टार्ट ही क्यों, अब कर ही क्यों रहे हो ये? Yeah, I don't have answer for that karna. I don't know. Maybe I'm thinking कि शायद इस बार complete हो जाएगा, इस बार हो जाएगा. Every time then I चलो give up एक कि ऐसे maybe करो ना, शायद. इसे हम्म. ऐसे करो कि ये लाइन को छोड़ दो अभी, क्योंकि इससे तो बात नहीं बन रही हम्म. है. इट इज वेरी हम्म. क्लियर कि ये आंसर से तो बात नहीं बन रही है, तो इसलिए इस आंसर को 2 मिनट के लिए छोड़ दो. हम्म. तो सोचो कोई और आंसर होगा. हम्म. तो ये तो नहीं है, इसको छोड़ दो, इसको पार्क कर दो. तो नाउ माय क्वेश्चन विल बी कि आप स्टार्ट ही क्यों कर रहे हो, जब आप फिनिश तो करने वाले नहीं हो? आपके पास जिलियंस ऑफ एग्जांपल्स हैं कि आपको फिनिश तो करना नहीं है, तो Hey, स्टार्ट भी क्यों कर so रहे हो? so I so it's because maybe I'm ambitious. I'm ambitious to do things, but I am not doing it. अब क्यों नहीं कर रही हूँ वो है एम्बिशियस बट एम. तो नहीं वर्ड मैं यूज करूंगा यहाँ पे, because ambitious implies actions in there as well. Wishful thinking बोल सकते हैं, desire बोल सकते हैं. या या These are विशफुल more थिंकिंग loose डिजायर्स. terms. या. These are more loose terms. Ambition जब हम बोलते हैं तो ambition has like urgency in it, has action in it, has fire in it. Desire या wish doesn't really have much fire in it. It's more like कि this is what I wish, this is what I desire, कि ऐसा हो जाए तो बढ़िया हो. करेक्ट. कहीं ना कहीं ये पॉसिबल है. मेरे को तो नहीं लगता कि ये भी आंसर है एनीवे. सो कहीं ना कहीं ऐसे हो सकता है कि एक्चुअली यू डोंट वांट दिस टू हैपन, like basically you don't want to succeed.
नहीं, ऐसा This नहीं है। sounds to me like a self-sabotage behavior, to be honest. हम्म, This sounds like कि या you are choosing to stay small while you are pretending to be big. या ये तो मुझे कैन बी, ये सेल्फ कैन बी। सैबोटाज बिहेवियर के लक्षण हैं, जिसमें हम कुछ स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम खुद ही उसके आगे आ जाते हैं और फिर खुद ही हम उसको किल कर देते हैं। तो या सेल्फ सैबोटाजिंग में हम दिखाने के लिए वो काम करते हैं कि दिखाने के लिए, खुद को दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, कुछ भी है वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। वो आपको वो शायद खुद को दिखाने के लिए भी हो सकता है, किसी और को दिखाने के लिए भी हो सकता है ट्रू। कि मैं कर तो रही हूँ, आई एम नॉट सिटिंग आइडल, आई एम डूइंग समथिंग. या But at the same time you're also scared ki what if this becomes, if this goes big, what if I actually succeed. succeed may not be is what the fear is. Maybe कि मुझे हमेशा करते रहना पड़ेगा इफ आई एम डूइंग इट, तो ये ना मुझे एक ना लाइफस्टाइल में लाना ही पड़ेगा ये चीज को। मे बी इट इज गुड थिंग टू ब्रिंग इट, बट आई डोंट नो, आई शायद मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे वो एफर्ट लाइफ लॉन्ग देना पड़े उस चीज के लिए। हाँ, 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 तो अंदर से तो यू वांट टू स्टे स्मॉल बेसिकली, या मे बी पर ऊपर से आप वर्ड एम्बिशन भी यूज कर रहे हो. छोटा नहीं, मतलब सेल्फ सैबोटाज इज व्हाट आई डेफिनेटली रिलेट विथ कि यस आई डू दैट, बट छोटा रहना आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। नहीं, वो इट्स ओके. आई दिस इज नॉट अ कंफर्मेशन, ये मैं आपसे कंफर्मेशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ. सेल्फ सैबोटाजिंग इटसेल्फ मींस दैट आपको ये अभी क्लिक हो या नहीं हो इससे मैटर नहीं करता है. ओके अगर क्लिक हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो हो जाएगा. बट दीज मीन्स द सेम थिंग, दिस वन मीन्स द अदर, इसमें कोई कंफर्मेशन वाली बात है ही नहीं. ये तो मैं बस आपको बता या रहा हूँ कि सेल्फ या सैबोटाजिंग टोटली मीन्स एग्री। स्टेइंग स्मॉल. मुझे बड़ा बनने में डर लग रहा है, मुझे या तो मेरी कोई आइडेंटिटी खो रही है, या तो कुछ तो खो रहा है, कुछ तो छूट रहा है, दिस फियर ऑफ लूजिंग करेक्ट। समथिंग. या टोटली। तो जो पाना है, वो पाना उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा खोना है. जो आपको मिलेगा ये करके, वो उतना बड़ा नहीं है जितना खो जाएगा. ट्रू। हाँ, तो खोने का मतलब, फियर ऑफ लूजिंग मीन्स मैं समेट के बैठा हूं जो मैं हूं उसको. आई एम स्टेइंग स्मॉल, आई एम स्टेइंग विद इन द बाउंड्स. या मुझे खोना नहीं है कुछ, बट मुझे ये करेक्ट। ऐसा प्रिटेंड करना है कि मैं कुछ और पाने के लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ, मैं कुछ ये कर रहा हूँ. पर अगर वो बिना कुछ खोए मेरे को मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात या है ना. बिना या कुछ खोए मेरे को ये चीज मिल जाएगी तो अच्छा है, लेकिन ये मिलने के लिए कुछ खो जाएगा तो फिर एफर्ट्स मेरे भी नहीं को डालने नहीं, हैं। फिर मेरे आई को थिंक एफर्ट्स भी नहीं वन ऑफ, डालने हैं. मुझे एफर्ट्स ही नहीं डालने हैं। आई टोटली हाँ, थिंक कि एक थोड़ा सा है ये चीज कि आई डोंट वांट टू पुट मोर एफर्ट्स। आई वांट कि स्मार्ट वर्क से काम हो, हार्ड वर्क से ना हो कुछ भी। कि इतना तो दिमाग है कि अपन चीजें काफी चीजें अपन दिमाग से ही कर लेते हैं ये एंड ऑल। ये सिर्फ सो बोलने ये वाली शायद बात है. इल्यूजन, हाँ ये शायद हाँ, मेरी ये इल्यूजन है। डिल्यूजन. हाँ, ये इल्यूजन क्योंकि ये मेरी सिर्फ है। बोलने वाली बात है कि ऐसा है, क्योंकि होता क्या है कि आप जैसे हो, जहां हो अभी, द काइंड ऑफ पर्सन यू आर राइट नाउ. जैसे अभी क्या है, 8 बज रहे हैं. अगर अभी 8 बजे हम एक लाइन ड्रॉ करें एंड वी से दिस इज व्हाट लता इज, whatever you are, whatever skills you have, whatever resources, knowledge, experience you have, आज अगर हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दें तो इस लता को जो मिलना था, जो मिल सकता था, वो मिल चुका है. आपको आज की डेट में इस समय वो सब कुछ मिल चुका है जो मिल सकता था, ऐसा हो के जैसे आप हो.
कुछ छूटा नहीं है, कुछ भी छूटा नहीं है। आपको ऑलरेडी नहीं। सब कुछ मिल हम्म। चुका है जो आपको मिल सकता था, बीइंग अ पर्सन दैट यू आर राइट नाउ। नहीं, ऐसा नहीं है। आई डोंट थिंक कि मुझे मिल चुका है। आई स्टिल फील लॉट्स टू बी डन एंड फॉर आगे फॉर बताता हूँ, रीचिंग हाँ, समवेयर। ओके, मैं ओके, इसको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट आई एम सेइंग। ओके, ओके। आप बात कर रहे हो डिजायर्स की या फ्यूचर गोल्स की एंड ऑल दैट। ठीक है, हम सबके फ्यूचर गोल्स होते हैं, डिजायर्स होती हैं, लेकिन एक फ्यूचर गोल अचीव करने के लिए आपको जो फ्यूचर वर्जन बनना पड़ेगा, पहले वो बनना पड़ेगा, तब वो मिलेगा। तो आप जो आज जो वर्जन आपका है, उसको जो मिल सकता था, वट एवर दिस वर्जन डिजर्व्स हैज ऑलरेडी गॉट इट। यू मे नॉट अग्री विद दिस कि आई डोंट डिजर्व दिस, एंड देयरफॉर यू आर क्रिएटिंग गोल्स एंड अदर थिंग्स कि आई वांट टू स्ट्राइव फॉर दिस। फाइन, नो प्रॉब्लम विद दैट, यू कैन, पर अंडरस्टैंड कि वो अचीव करने के लिए आपको कुछ और बनना भी पड़ेगा। तो इन अदर वर्ड्स, कुछ तो छूटेगा। यही वर्जन में, यही रह के, एग्जैक्टली यही रह के आप ये चाहो कि वो सब भी मिल जाए, तो वो उस बाउंड्स के बाहर की चीजें हैं। इन इस बाउंड में अगर आज एक गोलधारा बनाया, तो ये गोलधारे के अंदर आपको जो मिल सकता था वो मिल गया है। आपकी जो डिजायर है वो इस गोलधारे के बाहर की है। यू कैन डेफिनेटली एक्सपैंड योर सेल्फ, यू कैन डेफिनेटली डू ऑल दैट, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ध्यान इस चीज पे ला रहा हूँ कि उसके लिए खुद को एक्सपैंड करना पड़ता है। और वो एक्सपेंशन में हम कई बार हमें चेंज करनी पड़ती हैं चीज़ें, जिसमें हमारी कुछ हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, हमारे कुछ आ, ये प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं, हमारी कुछ वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, हम कुछ नया अडॉप्ट करते, कुछ पुराना छोड़ते, कुछ नया पकड़ते। तो व्हाट व्हाट हैज गॉट यू हियर विल नॉट गेट यू देयर। आप यहाँ जहाँ जहाँ तक या। पहुंच चुके हो, हम्म, आपके पास जो था वो आपको यहाँ तक ले आया है। अब यहाँ हम्म, से आगे जाने के लिए कुछ और चाहिए, और वो हम्म, कुछ और लेने के लिए हो सकता है कि कुछ छोड़ना पड़े, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हो हम्म, सकती हैं जो फिट नहीं होती हैं इसमें। हम्म, जैसे कि हम्म, एक लीडरशिप में हम एक टर्म यूज करते हैं कि लाइक गुड टू ग्रेट लीडरशिप के लिए एक टर्म यूज की जाती है कि गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। अगर आपको ग्रेट लीडर बनना है तो आपको गुड लीडर होना छोड़ना पड़ेगा। गुड लीडर बनने के लिए आपने जो चीजें एक्वायर की हैं, यहाँ तक जो आप जो चीजें भी एक्वायर करके यहाँ तक पहुंचे हो, वो चीजें एक्वायर करके आप आज एक गुड लीडर बन गए हो। यही चीजें कैरी फॉरवर्ड करके आप ग्रेट लीडर नहीं बन सकते हो, बन सकते होते तो बन चुके होते अभी तक। या, अगर या। वही सब चाहिए होता तो हम्म, हो चुका हम्म, होता। जैसे कि करेक्ट। मुझे कोई रेसिपी बनानी है, तो मेरे पास जो हम्म, इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं उन इंग्रेडिएंट से एक सर्टेन टाइप की रेसिपी बना सकता हूँ। मुझे कुछ और बनाना है तो मुझे कोई और रेसिपी, कुछ और इंग्रेडिएंट्स लाने पड़ेंगे। अगर मेरे को इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए हो तो मैं इन्हीं से वो ऑलरेडी बना चुका होता। या। तो many a times we acquire some things, we acquire certain thought processes, certain mindsets to get somewhere in order to get to that point। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए कई बार हमको चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, अडॉप्ट करना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है, ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। अपनी हैबिट्स, अपने रिचुअल्स, अपने डे टू डे स्केड्यूल, काफ़ी चीज़ों में ऑल्टरेशन लानी पड़ती है, ताकि मैं अब आगे के गोल्स को जो मेरे दिमाग में है, व्हाट आई डिजर्व, उसको मैं अचीव कर सकूं। तो अगर मैं सिर्फ अचीव करने पे ही फोकस करूंगा, जो कि आप कर हम्म, रहे हो इस समय, आप सिर्फ हम्म, अचीव करने पे फोकस कर रहे हो और वो हो नहीं रहा है। हम्म, आप बनने पे फोकस नहीं कर रहे हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल ले रहा था कि मेरे पास आधा किलो का बाट है और मैं उसी से 1 किलो तोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये नहीं देख रहे हो कि मुझे आधा किलो का बाट पहले हटा के 1 किलो का लाना पड़ेगा।
Hmm. आप उसी को ही यूज करके 1 किलो, आपने आज तक आधा किलो तोला था तो वो हो गया था। Hmm. अब आपको अगर Got एक it. किलो तौलना है, 2 किलो तौलना है, 5 किलो तौलना है, तो इसको हटाना पड़ेगा, दूसरा लाना पड़ेगा। उस पर ध्यान नहीं आ रहा है आपका। आपके पास जो है आप उसी को ही यूज करके वो चीज अचीव करने की कोशिश किए जा रहे हो। So if I'm reading it correctly, do you mean कि I have old beliefs, and with old beliefs, I will not be going anywhere, and I have to, create new kind of, for new identity, I have to remove You the old skin. you have to first define the person that you need to become in order to be deserving that thing in the future that you think you deserve. इसका एक एग्जांपल मैं I, दूसरे I, एंगल I, से, I, yeah, yeah, please, Sakar. एक दूसरे एंगल से लेके, कि हम जैसे सिंगल्स क्लब के लिए हम एक बार एक प्रेजेंटेशन कर रहे थे, तो उसमें एक ये पॉइंट आया था जो हमने बात की थी कि मोस्ट पीपल हु आर सिंगल्स दे आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन फाइंडिंग द राइट पार्टनर। तो उनका ना हमेशा एक चेकलिस्ट रहती है, आई वांट दिस पार्टनर, आई वांट दिस पार्टनर, उसमें ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। तो हम एक बार डिस्कशन कर रहे थे, एक किसी के साथ डिस्कशन चल रही थी, तो मैंने बोला कि मान लो कि वो जो इंसान आपको चाहिए वो आ गया आपके आगे, आपकी चेकलिस्ट मैच हो गई, तो व्हाट वुड बी द रीजन कि दैट पर्सन, आप आपके लिए तो वो राइट पार्टनर है, बट क्या जरूरी है कि आप भी उसके लिए राइट पार्टनर हो? उसकी भी तो कुछ चेकलिस्ट होगी ना। तो हाउ डू यू नो दैट यू मैच टू दैट? आपके लिए तो मैच हो गया, आपने तो बोल Hmm. दिया हाँ मेरे हिसाब से तो चेकलिस्ट, बट वो जो इंसान है वो भी तो कुछ, वो भी तो लेके आया होगा कि आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम मी। आपने उस पर ध्यान दिया, आप तो दूसरे के रेड फ्लैग्स पे ध्यान दे रहे हो, अपने रेड फ्लैग्स पे ध्यान दिया कि आपने अपने रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई किया, उनको सॉल्व किया, क्योंकि वो भी तो ये चाहेगा ना कि ऐसा हो। तो फिर हमने उनसे एक्सरसाइज करवाई कि नाउ यू पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ द अदर पर्सन एंड यू राइट डाउन कि व्हाट वुड दी अदर पर्सन, जो राइट पार्टनर आपको चाहिए, वो राइट पार्टनर अपने राइट पार्टनर में क्या ढूंढेगा। तो जब उन लोगों ने वो एक्सरसाइज बैठ के करनी शुरू की और हमने उनसे बोला अब टिक करो कि इसमें आपके क्या क्या टिक हो रहे हैं, तो मेजोरिटी ऑफ लोगों के कुछ टिक ही नहीं हो रहे थे उसमें। दे हैव नॉट बिकम दैट राइट, दैट फ्यूचर वर्जन। वो जिसको फ्यूचर में खोज रहे हैं खुद तो बने नहीं है अभी तक, खुद तो यहीं बैठे हैं। Hmm. तो बस ढूंढ रहे हैं और फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि कोई मिल नहीं रहा है, क्योंकि लोग तो आ रहे हैं, ऐसा नहीं है मिल नहीं रहा है। 8 बिलियन की पॉपुलेशन है इस दुनिया की। इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। इसमें अगर हम ये बोले कि 150 करोड़ की आबादी में मुझको एक इंसान नहीं मिल रहा, तो ये तो मैथमेटिकल इम्प्रोबेबिलिटी है। मार्स पे तो रह नहीं रहे हैं। तो तो ये उनको मिल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। they haven't become the future version of themselves yet or working towards that future person। जहां तक मैं जाऊं और फिर मैं उससे मिलूं वहां आके, then I will say कि I now deserve this person deserves me, we have both worked and we have come to this point। मैं तो यहीं बैठा हूँ, मैं तो अपने पास्ट वर्जन में ही बैठा हूँ, अपनी सब पास्ट की Hmm. चीजों को ही पकड़ के बैठा हूँ, बट आई एम Hmm. एक्सपेक्टिंग कि मुझे मिल वो फ्यूचर वर्जन वाला राइट पार्टनर जाए, Yeah. मुझे कुछ काम करने की जरूरत ना पड़े। I Hmm. don't want to do anything because that is efforts। Then I have to, मेरे को कुछ सेल्फ वर्क करना पड़ेगा, मुझको अपने रेड फ्लैग्स देखने पड़ेंगे, मुझको ये करना पड़ेगा, मुझको वो नहीं करना। मैंने मैंने मतलब मैं ट्राई करता हूँ, मैं फिर किसी कोर्स में ज्वाइन करता हूँ, ट्राई करता हूँ, वर्कशॉप्स अटेंड नहीं कर रहा, कोर्स नहीं कर रहा, पर मैं चाह रहा हूँ कि वो मेरे को मिल जाए, और वो मिल नहीं रहा है तो मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। तो नाउ यू आर सीइंग द पैरेलल व्हाट आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ हियर। Yes, Akarva, totally get it. And I know where you're going. But see, I understand कि I have to make changes. I already know the red flags. So if the person knows it, ठीक है, लेकिन सेल्फ सैबोटेज का जो बिहेवियर है, सी, ये सब चीजें ना आई हैव वर्कड ऑन बिकॉज आई अंडरस्टूड कि देयर आर रेड फ्लैग्स इन माई सेल्फ एज वेल दैट आई हैव टू वर्क। रिलेशनशिप्स पे आई हैव वर्कड अ लॉट, इट हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट इन लास्ट 1 year, बट फॉर माई ओन गोल्स, एज आई सेड ना कि मुझे किसी ने असाइन किया ना कुछ, आई विल डू दैट, बट
जो जो चीजें, जो क्राइटेरिया जो मैं खुद के लिए बना रही हूँ, बट दैट आई एम नॉट फुलफिलिंग, आई डोंट नो व्हाई। कि बाकी कोई भी मुझे अगर कोई काम देगा ना, आई विल डेफिनेटली डू इट, ट्राई टू पुट परफेक्शन, कि हाँ ठीक है करके दे दिया, फटाफट अच्छे से होना चाहिए ये। इनफैक्ट मुझे एंजाइटी भी होती है कि कुछ प्रेजेंटेशन देना है तो इट शुड नॉट, आई शुड नॉट बी दिस थिंग, इसीलिए आई हैव डन सम कोर्सेज उसी कोर्सेज के लिए, बट आई एम नॉट यू नो the goals that I set for myself, I am not walking on the path that I am, craving to reach. I understand कि आपने जो बोला कि if I have to reach somewhere, I have to become like that. I have to leave the old patterns. I totally get it, but I'm not able to do it. Is what my challenge is. Self sabotage is what I can relate to it. That maybe शायद I deep down think कि हाँ ये कंफर्ट जोन है, अभी इतने इसके ऊपर नहीं जाते हैं, ठीक है शायद कुछ लूज हो जाएगा, मे बी इज व्हाट आई फील कुड बी वन ऑफ द पिन पॉइंट्स दैट आई विल हैव टू डिग मोर। या इसका इसका एक और एग्जाम्पल है। इनफैक्ट कल ही एक चीज हुई, दैट देयर वाज दिस गाय एंड उसको सब ये अवेयरनेस है, सब कुछ उसको समझ में आता है, पता है एंड ऑल दैट। सो yesterday he was texting me and he was saying that everybody is getting girls, I'm 35 and मेरी लाइफ में आज तक कोई भी एक भी इंसान नहीं आया, I want a healthy relationship, I want this and I want that, एंड मेरी लाइफ में ऐसा होता ही नहीं है, ये चीज हो ही नहीं रही है, ये है दुनियादारी। मतलब at the age of 35, all the options that I have is either of divorcees or of widows with kids, right? So I don't have any options. I don't have any options. I also want abundance of options, right? He was saying कि मेरे पास कम से कम 25-30 options तो होने चाहिए to choose from, right? तो I was like कि 25-30 क्यों, तुम्हारे सामने तो 1000 options भी लाके अगर रख दिए जाएं, You might तुम तो not तुम be ही रहोगे। able to choose. एग्जैक्टली तुम तो तुम ही रहोगे ना। 25 और 1000 में क्या फर्क पड़ता है, 1 लाख भी ऑप्शंस हो जाए, राइट? क्योंकि तुम्हारा तो ये बिलीफ सिस्टम है कि एट द एज ऑफ 35 नो एलिजिबल गर्ल्स आर लेफ्ट आउट, राइट? तो आई एम गोइंग टू फाइंड विडोज एंड डिवोर्सीज ओनली, और मुझे विडोज और डिवोर्सीज नहीं चाहिए, तो अब मुझे कोई नहीं मिलेगा। दैट इज हिज बिलीफ सिस्टम। बट ही इज सेइंग कि आई वांट अबंडेंस ऑफ ऑप्शंस, मेरे पास 25-30 ऑप्शंस होने चाहिए। तो मैंने बोला कि अगर मतलब दिस, तो so I'm trying to draw a parallel over here कि उसका बिलीफ सिस्टम ये है, राइट, कि उस एज में उसको कोई नहीं मिलेगा, बट देन ही इज ऑल्सो सेइंग कि मुझे 25-30 ऑप्शंस चाहिए। सो यहाँ पे देर इज अ मेजर गैप बिटवीन व्हाट ही इज वांटिंग। अगर उसको 25-30 बेसी, बिकॉज if you look around, I have seen plenty of men and women. There's one friend of mine who's 45, who he was never married. He just got married, right? Maybe 3-4 months ago, he just got married. And I have plenty of options where people are finding relationships, are not having trouble finding relationships. उनको लोग मिल जाते हैं, right? Because they have a belief system कि it's possible and it's there. So they kind of, end up attracting the same kind of things. And when they attract those kind of things, they're also able to welcome those people. So यहाँ पे दो barriers होते हैं while creating this scenario for ourselves कि अगर हमारा ऐसा belief system है, तो या तो हमारी लाइफ में वो लोग ही नहीं आएंगे, और अगर गलती से वो लोग आ भी गए तो हम ही केपेबल नहीं है, हम उनको रिजेक्ट कर देंगे, राइट? बिकॉज वी सबकॉन्शियसली बिलीव कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है होना। इनफैक्ट आई वुड से कि दे वांट टू बी इन द उस मोड पे कि मैं भी रिजेक्ट करूंगा, मेरे पास 25 हो तो मैं 24 रिजेक्ट करके एक लेके आ रहा हूँ, और आई विल गेट सेटिस्फाइड कि मैंने 25 रिजेक्ट किए, उसमें से मैंने बेस्ट चूज किया। सो वो एक होता है ना कि मैं अगर इफ आई एम वी आर गोइंग इन अ मॉल और हमने बहुत सारी चीजें देखी, उसमें से एक लिया, या सिर्फ किसी ने एक लाके दे दी, तो हमको वो एक हमेशा रहता है कि पता नहीं अच्छी है कि नहीं है, शायद और देख लेते तो शायद अच्छी मिल जाती, राइट? तो that नहीं, is the बट reason पीपल people हु आर want choices ऑपरेटिंग as well. फ्रॉम, people want choices and there should be choices. Choices are kind of our birthrights, right? But then the difference comes between if it is coming from a healthy belief system
where somebody comes and says that I have these set of values, these set of non-negotiables, और जब तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिलेगा, I'm not going to find that way, make a choice, which is a healthy way of dealing with things कि हम filter out कर रहे हैं, right? But people who are coming from this kind of a mindset, जहाँ पे उनको ये पता ही नहीं है कि उनको क्या चाहिए, so उनके सामने अगर कोहिनूर का True. हीरा भी लाके रख दिया जाए, so they will be saying कि maybe this is too much, ये कुछ ज्यादा ही अच्छा है, ये तो मैं नहीं हैंडल कर सकता, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम ही ये है कि मैं हैंडल नहीं कर सकता. So the major thing, the major point which comes where we need to work upon कि हम ये वाला जो belief system है कि मैं नहीं handle कर सकता, I'm using just a specific set of words, इसको इस चीज में कैसे transform करेंगे कि मैं handle कर सकता हूँ. Right? So in your case, like you were saying, कि मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कर पाती, मैं नहीं कर पाती, मैं नहीं कर पाती, इसको ट्रांसफॉर्म करके हम एक ऐसी स्टेज पे कैसे पहुंचेंगे कि आई कैन डू इट, आई कैन हैंडल इट, आई कैन फिनिश इट. Right? That is the whole paradigm shift that we are looking for, because when we come in that skin where we have that kind of a belief system that I can handle it, तो ठीक है, अभी अब इसके आगे इसके जो भी consequences होंगे, I will see what is going to come and I'll handle that, and फिर उसके जो consequences होंगे, I'll go forward and I'll handle that, and then फिर उसके आगे जो होगा, I'll go forward and I'm going to handle that. So one step Anamika, at a time. I feel कि the problem that Lata was describing was something that you faced earlier as well. तो maybe वो example से better होगा, because she mentioned during the talk कि अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरा lifestyle change हो जाएगा, ऐसा होगा, तो this was something you struggled with as well, no? So I think perhaps you can just talk from that side, okay? How you overcame that. Yes, Akarna. I was going to come to that only. कि अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट की हम बात करते हैं, जैसे कि इफ आई टेक माय पर्सनल एग्जांपल, आई was coming from the belief system that I cannot handle it. मेरा, like Lata, you were talking, I was probably using very similar words, a few years back, and I was in a constant loop कि मैं करना चाहती हूँ, मुझे अचीव करना है, बट उसके लिए जो एक्शंस लेने हैं, अगर मैंने वो एक्शंस ले लिए तो फिर यार मैं फंस जाऊंगी, राइट? इन केस गलती से सक्सेसफुल बन गए ना, फिर फंस जाऊंगी, एंड देन फिर रोज करना पड़ेगा, राइट? देन उसके बाद मुझे ये टाइम नहीं मिलेगा दैट आई विल बी एबल टू स्पेंड टाइम फॉर माई सेल्फ, डूइंग जस्ट वट एवर आई विश टू डू. मेरा जब मन कर रहा है मैं उठ रही हूँ, जब मन कर रहा है मैं सो रही हूँ, जब मन कर रहा है टीवी देख रही हूँ. ये सब चीजें जो मेरी फ्रीडम है, दैट विल गेट सैक्रिफाइस्ड. Now the point is कि there is that tipping point which comes into picture, right? That tipping point came for me where I realized this one thing कि इस स्पेस में रह के जो पेन है ना, अपने आप को सेल्फ सैबोटेज करके जो पेन है ना, ये एक्चुअली उस प्रोसेस से गो थ्रू करने का जो पेन है, उससे ज्यादा बड़ा है. एक्चुअली हमारे माइंड में ऑपोजिट पिक्चर होती है, राइट? कि हम कंफर्ट जोन पे होंगे, हम एक मतलब इंस्टेंट स्ट्रेस फ्री लाइफ जो हमको मिल रही है, दैट इज lesser pain compared to the pain that I have to take while going through the process of becoming what I want to become. So ये हमें लगता है, but then there comes a tipping point where you have to make a decision कि अब बहुत हो गया, this is enough, this is like मैं कब तक ऐसे ही अपनी लाइफ वेस्ट करती रहूंगी, ऐसे ही मतलब डे बाय डे, इयर्स, मंथ्स बाय मंथ्स, इयर्स बाय इयर्स, इट्स पासिंग ऑन, एंड आई एम एक्चुअली नॉट doing all of these things while I know that I can, like you were saying, Lata, that I know that I have the caliber to do all of those things, right? So um I was frustrated, and I had hit that tipping point, and I sat one day, right? I was just talking to Akarna about that, and
उसके बाद द शिफ्ट दैट आई वाज लुकिंग फॉर कि पहली चीज तो इसमें काफी ज्यादा डिगिंग की जरूरत है, वे यू हैव टू आस्क योरसेल्फ these questions. I can give you guys a few set of questions कि what are these fears made up of? Because हम सबके अलग अलग fears हो सकते हैं, right? एक चीज आपने बोली लता की कंफर्ट जोन के अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं। एक चीज होती है नॉट टेकिंग ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन एक फेयर ये होता है मोस्टली लोगों का कि अगर मैंने एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली ना, एक बार ये चीजें कर ली ना, तो बार बार लेनी पड़ेगी, एंड देन आई विल बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर थिंग्स, एंड आई विल बी क्वेश्चनड, एंड इन केस आई मेक अ मिस्टेक, इफ आई एम, बिकॉज विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज सेज स्पाइडरमैन। तो if I take more Yeah. responsibility, I will have more power, and then फिर मैंने गड़बड़ कर दी तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, ज्यादा गड़बड़ कर दी तो ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, राइट? सो not wanting to take responsibility, plus it gives you a free pass of blaming things around. We can blame things on all sorts of things. We can pass the blame on people, that my parents don't allow me to do this, my husband doesn't allow me, my wife, my kids, I don't have time, my health does not allow me, my this, that, whatever, right? मैं like the sentences that you were saying, मैं करना तो चाहती हूँ but हो नहीं पाता है, right? So and there could be कोई thousands नहीं of मिले, reasons. कोई अगर नहीं मिले तो भगवान तो है ही ब्लेम करने के लिए, किस्मत ही हाँ, खराब है। Problem is I'm not blaming anyone but myself. You know, I have gone through all the dialogues कि why do I वो keep भी doing the वो same भी thing? तो ब्लेम ही So है। I हाँ, feel now I know it कि सबसे बड़ी दुश्मन मैं खुद की मैं ही हूँ कि I willpower is so low कि not able to sustain something for not even for 21 days, 30 days. So it has become like यार ये तो क्विटर ही हैं टाइप्स की, कुछ ले रहे हैं और कर ही नहीं रहे हैं, कर ही नहीं रहे हैं। We want everyone else to do it. अभी I have a kid तो I expect कि वो उसे करना चाहिए, या I have resources under me तो I expect सेम चीज वो डायलॉग उनको बोलती हूँ कि हाँ चलो कर दो, I keep बट when it comes to myself I'm not doing it. So ये थोड़ा ऐसा लगता है कि preaching but not practicing. बिल्कुल बिल्कुल, and self blame is no different. I mean, all you are doing is blaming versions of you, different versions of you, different parts of Yeah. you कि तुम्हारे कारण से मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, तुम्हारे कारण से ये नहीं कर पा रही हूँ, और मे बी यंगर वर्जन्स ऑफ यू कि मैंने 4 साल पहले अगर तुमने ये किया होता तो आज ये नहीं देखना पड़ता, वो नहीं देखना पड़ता, राइट? सो या तो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, सेल्फ को ब्लेम करते हैं, और फिर कोई नहीं मिलता तो भगवान को ही ब्लेम कर देते हैं, बट ब्लेम इज ब्लेम, राइट? ब्लेम सिंपली मीन्स कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी भी तो हमारे हाथ में बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, बट देन हम सेल्फ को भी ब्लेम अगर कर रहे हैं, इट अलाउज अस टू नॉट डू दोस थिंग्स, नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? सो नॉट टेकिंग ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वन थिंग. बीइंग इन आवर कंफर्ट जोन, फेमिलियर जोन, हमें पता है कैसे चीजें हैंडल करनी है, नेगेटिव ही सही, अनहेल्दी ही सही, बट हम हैंडल कर लेंगे क्योंकि वैसे ही अपनी लाइफ बिताई है ना. देन एंटरिंग द न्यू टेरिटरी इज टेरिफाइंग. Another reason is a lot of people get fixed by this thing, as I'm talking about my example, is the how part of it. Sometimes people know what they want to do, but they don't know how they are going to do it, right? So bus they don't take action because they don't know how they're going to do it. Like I wouldn't take action because I don't know how I'm going to do it, right? So I need an entire action plan. मतलब आज हो सकता है 2 steps हैं मेरे पास which I can take, after which the third will be revealed, but then I want to Fear know of unknown, all the yeah. steps. करेक्ट, फियर ऑफ अननोन, यू नेवर नो, मे बी शायद 4 स्टेप के बाद में वापस स्टक हो जाएंगे और बंद करना पड़ा, सपोज स्टार्टिंग समथिंग न्यू और एफर्ट डाल दिया, सब कुछ हो गया, 4 दिन के लेकिन बाद लता फिर आपके केस में वो चीज एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आपने जो एग्जांपल लिया कि आपने अगर योगा क्लास ज्वाइन किया तो आपके पास तो कोई है हैंड होल्डिंग करने के लिए, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि फियर ऑफ अननोन, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट DIY स्टाइल.
आप नहीं, DIY मतलब हैंड होल्ड नहीं हो रहा है वहां पे योगा में. नो वन इज आस्किंग मी. इट्स जस्ट ऑनलाइन. सेल्फ इम्प्रूवमेंट में इट इज ऑनलाइन. आई डू नॉट हैव एनी पर्सन हु विल कॉल और आस्क कि पर क्यों नहीं आप किया. कर नहीं, ऐसा सकते हो, कुछ नहीं है. पर आप कर सकते हो, अगर आप कहीं पे अटकते हो तो आप किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हो या नहीं पूछ सकते? हाँ, पूछ सकते हैं. हाँ, तो द हैंड होल्डिंग इज देयर. हैंड होल्डिंग डजंट ओनली मीन कि हर स्टेप पे कोई आपका ऐसा, मतलब somebody is there to guide you. If you need guidance, somebody is there, you can approach, right? बट पुश तो इज fear नॉट of देयर. push is not there, that is fine. वो तो अलग बात है, कोई पुश कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, that is fine. तो हम भी अपने वर्कशॉप्स और अपनी चीजें करते हैं, हम भी किसी को पुश नहीं करते, बिकॉज एडल्ट एजुकेशन में पुश पुश बच्चों को लगता है, एडल्ट्स को नहीं लगता. तो adult education doesn't work like this with push. Adult education is more like कि we are there, कुछ चाहिए तो बताओ. तो it's like that. तो आपके पास कोई है, आप पूछ सकते हो. तो fear of unknown doesn't apply here because you can clarify. तो आपके केस में जो एलिमेंट्स यहाँ पे मुझे, परहैप्स आई डोंट नो, मैं गैस कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इन सब चीजों के बहुत सारी वो फैक्टर्स हैं, वो ना करने के, वो टू स्टे स्मॉल एंड ऑल दैट. वन दैट अनामिका सेड कि पता ही नहीं है कि क्या करना है, हाउ नहीं पता है, ठीक है, लेकिन वो सॉल्वेबल है बिकॉज यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम पीपल. करेक्ट. तो देर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु नो हाउ. आपको नहीं पता है लेकिन आप पूछ सकते हो. तो अगर हम ये अगर हम पकड़ के बैठे कि आई डोंट नो हाउ एंड आई एम नॉट अप्रोचिंग, दैट itself shows a self sabotaging behavior. तो दैट इज वन कि हाउ. सेकंड इज लेजीनेस. उसका कोई इलाज नहीं है कि अगर इफ somebody is lazy, प्रोक्रेस्टिनेट, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता है, फिर तो इट्स जस्ट, फिर तो दैट्स इट. लेजीनेस का कोई इलाज नहीं. फिर नेक्स्ट आता है लैक ऑफ डिसिप्लिन. वो भी बिल्ड करने की बात है, अकाउंटेबिलिटी बिल्ड करने की बात है. तो एंड द अदर थिंग, एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज फीलिंग विक्टिमाइज्ड. सो हम अपना विक्टिमहुड एंजॉय करते हैं. तो ये करके ना मुझे वो विक्टिमहुड एंजॉय करने का मौका मिलता है. आई कैन स्टे विक्टिम कि देखो मेरे ऊपर ही सारा काम आ रहा है, मेरे ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो मैं अपने आप को बेचारा बेचारी दिखा सकता हूँ. लेकिन अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और करना शुरू कर दिया, और गॉड फॉरबिड्स कि आई एक्चुअली सक्सीड इन इट एज वेल, तो मैं तो अपना विक्टिम कार्ड लूज कर दूंगा. फिर मैं रहूंगा किस बात पे? राइट. सो attachment to that victim card is one of the reasons why people will self sabotage, क्योंकि it's a ticket for them to stay victim, to stay कि सब कुछ मेरे ऊपर ही आ रहा है, ये भी मेरे को करना पड़ेगा, ये भी मेरे को करना, कोई मेरी हेल्प के लिए नहीं आ रहा, मैं तो अकेला हूँ, बेचारा बेचारी, all that kind of that card I can keep playing, which then तो मैं ले ही नहीं रहा हूँ ओनरशिप. और अब ओनरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात अनामिका ने की, वो भी हो सकती है. ओनरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी सिखाई ही नहीं है पेरेंट्स ने, सब कुछ कर करके दे दिया है, एकदम सब कुछ थाली में परोस के दे दिया है, कभी कुछ कुछ करने के लिए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनरशिप लेना सिखाया. तो these people when they become adults and they enter life like that, they struggle, क्योंकि डिजायर्स और विशेस तो बहुत ऊंची ऊंची हैं, लेकिन कभी उनको वो होता ना, वो बोन सी डेवलप नहीं की कभी पेरेंट्स ने, तो रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, तो खड़े ही नहीं हो सकते. तो one of the reason for sure. that yeah, that again is an element of taking help. So इसमें if you are एक stuck, so if the issue is discipline, that's an area to take help. If the issue is don't know how, that's an area to take help. If the issue is playing victim card, that's an area to take help. If the issue is not knowing how to take ownership and responsibility, that's an area to take help. If the issue is laziness, nobody can help.
हाँ, अनामिका। लता के केस में आपने वो जो लाइन बोली थी ना लता, कि हम्म लेकिन क्या हो जाएगा, ये क्या हम्म मतलब है ये सब करके, राइट? वो हम्म मुझे लग रहा है एक बहुत ही कोर कोर इशू है। आई मतलब आई वाज टॉकिंग अबाउट माय एक्सपीरियंस एंड द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वाज गोइंग टू मेक वाज दैट ओनली, because हम्म when we are raised in an environment where nothing that we have done ever mattered, हम्म right? जिस चीज में हम अगर कितना भी कुछ कर लें ना लाइफ में, कितना भी कुछ कर लें, एंड इट्स नेवर अप्रिशिएटेड, इट्स नेवर गोइंग टू गेट एक्नॉलेज्ड, इट्स नेवर गोइंग टू बी सीन हर्ड, नो एक्सेप्टेंस, कुछ नहीं कुछ नहीं, कितना भी कर लो, भागो 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 भागो। When we are raised in an environment like that where everything is a trophy, right? And even हम्म if you win one, you're not appreciated by that. Then we start developing this thing कि क्या ही हो जाएगा, कि कर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने ये हम्म अचीव भी कर लिया तो क्या होने वाला है। और इसके परफेक्शनिज्म साथ ट्रेट। परफेक्शनिज्म ट्रेट, इसके अलावा एक चीज और आती है कि अम, ये मेहनत करके भी क्या मतलब है अगर कुछ होने वाला ही नहीं है लाइफ में। आई एम नेवर गोइंग टू बी गुड इनफ, आई एम नेवर गोइंग टू मेक इट, इट्स नेवर गोइंग टू मैटर, व्हाट आई डू डजंट मैटर, इट्स, इससे कोई कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है, राइट? इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो करना ही क्यों है, छोड़ो, नहीं करते, राइट? क्योंकि हम्म हमें ये फील कराया गया है, व्हेन वी वर, आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट हाउ द बिलीफ सिस्टम इज डेवलप्ड, सो हमें ये फील बार बार कराया गया है कि ये नथिंग यू नो इज गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, और आई विल नॉट, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, तुम कर ही नहीं पाओगे, तुम डिजर्व ही नहीं करते। कर ही नहीं हम्म पाओगे, या फिर 100 out of 100 नहीं ला पा रहे हो, तो नथिंग इज गुड एनफ, नथिंग इज गुड एनफ अदर देन 100 out of 100। हम्म 70 is not good, 80 is not good, 60 is not good, 98 is not good, 99 is not good, 100 is the only acceptable score। तो तो वो जीरो से उठ के सीधा 100 पे जाना है आपको, और वो इतना डॉन्टिंग टास्क लगता है कि कौन जाएगा, अभी अब इतनी हिम्मत नहीं बची, अब क्या हो जाएगा, 20 आ गए, 30 आ गए, 40 आ गए, क्या ही हो जाएगा, कौन खुश होने वाला है, क्या फायदा है, क्यों करना है। हम्म थोड़े बहुत से तो खुशी मिलने नहीं वाली। पहले शायद आपके ऊपर ये चीज थोपी गई होगी, अब आप खुद पे ही थोप रहे हो। अब तो शायद वो जिन्होंने आपके साथ पहले ये किया होगा वो तो अब नहीं कर रहे हैं। यू आर एनफ फॉर योर सेल्फ, अब आप ही कर रहे हो अपने साथ, कि क्या ही हो जाएगा। अगर अगर पूरा वहां तक, अगर 100 तक नहीं पहुंच सकते, तो फिर नथिंग इन बिटवीन इज गुड एनफ, तो क्या ही हो जाएगा, क्यों ही करना है, जीरो पे ही बैठे रहो। तो फॉर यू, जीरो इज बेटर देन 5, जीरो इज बेटर देन 10। yeah totally agree with it. In fact, I was thinking on this line कि मुझे ना सिर्फ बाइनरी अच्छा लगता है, जीरो या वन, या तो मेरे पास जीरो पे रहे या तो फिर वन पे रहे। हाँ, तो बीच का कुछ सो देर इज क्योंकि ग्रे, बीच का हाँ इज नॉट ग्रे नहीं समझ एक्सेप्टेबल, में आता। हाँ बीच ग्रे का मुझे समझ में ही नहीं एक्सेप्टेबल। आता। एवरीथिंग हाँ, इट इज लाइक या तो फिर दे दो या तो फिर कुछ भी नहीं चाहिए, फिर दैट्स अ मुझे बीच वाला वो परफेक्शनिज्म चीज चाहिए। ट्रेट। हाँ, दैट्स अ हम्म परफेक्शनिस्ट ट्रेट, क्योंकि perfectionists do not appreciate continuous improvement, they aim for the impossible straight away। उनको उनको इस हम्म बात से खुशी नहीं मिलेगी कि अर्थ से उठ के चांद तक तो पहुंचे, उनको ना यूनिवर्स के एज तक ही जाना है सीधा। एग्जैक्टली। और जब पता चलता है कि वहां तक तो तो नहीं पहुंचा जा सकता है, तो चांद पे भी जाके क्या ही होगा, बैठे रहो यहीं पे। हाँ हाँ, तो वन ऑफ द थिंग इज लाइक दिस कि मिडवे जाके क्या ही हो जाएगा, मतलब एनीवेज unless and until end result is not that beautiful, मिडवे का कौन ही अप्रिशिएट कर लेगा, या क्या ही हो जाएगा, आधी पेंटिंग या आधा आधी चीज का क्या ही कर लेंगे, एनीवेज करेक्ट, शायद उतना दूर तक जाए भी नहीं। तो लेट्स करेक्ट, ड्रॉप इट हियर इटसेल्फ, व्हाई टू गो हाफ वे एज वेल। करेक्ट, करेक्ट। सो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा,
but it doesn't exist for you. वो सुना है Yes. आपने, समझा भी Yes. है, जानते भी हो, Yes. but that's not for you. You don't Hmm. believe in it, you don't apply it. You just know, you only know it. Hmm. Hmm. राइट। तो ये तो हमने एक्सप्लोर कर लिया कि हाउ दीज पास्ट experiences, childhood experiences that shape our belief system. And so we are having a conversation with Lata, but this is not just about Lata, and this is not only about this particular topic that we are discussing, right? ऐसे ही हर टॉपिक में wherever you are stuck, you can do this first thing कि आप ये चीज पता लगाओ कि what why these things are happening, right? What are the areas, how they are formed, and then we can of course dig deeper into understanding the root causes of these things, how they got created and all that. So this is the first step of understanding this thing. This is the first step I also took, right? It is applicable for all the different kinds of problems, all the different kind of self-worth, self-esteem issues and all that. Once we have understood that thing, now in Lata's life, she can see enough evidence that carrying this kind of belief system, what kind of life she has created for herself. And this applies to me, this applies to a karma, this applies to every person who's here and every person who exists on earth. हमें कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है. हमारे belief system से हमारे, and when I'm saying about the belief system, it it's not just about the belief system that I'm talking about. It is interconnected to all the different sheets that create you, how you express and operate in the world as a human being. So हम उस पूरे एस्पेक्ट को लेके चल रहे हैं. ये जो भी है, you don't create your reality based on what you want. Like we were speaking to Lata, her example, my example. We did not create our reality based on what we want, because we want to be big people, achieve a lot of things, right? But our reality, if you look around yourself, it is created based on what we are, right? How we are deep inside, whatever things are there deposited deep inside our belief system, our emotions, our energy, our entire psyche. ठीक है? तो एविडेंस बाहर फाइंड करने की, कहीं और देखने की जरूरत नहीं. अपनी लाइफ को देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हमारी, बिकॉज वट एवर बिलीफ सिस्टम वी हैव, दैट इज रिफ्लेक्टिंग इन आवर आउटसाइड रियलिटी. ठीक है, बहुत बढ़िया. अभी ये रिफ्लेक्ट कर लिया. नाउ द होल पॉइंट इज कि अभी कॉन्शियस लेवल पे वी हैव अंडरस्टूड ये कैसे बना, क्यों बना, क्या बना. नाउ वी हैव टू स्टार्ट reframing, rewiring, not just the surface level stuff, right? But the deeper level stuff of us, which is our energy, which is our subconscious mind, which is our emotional guidance system, and purify all of those things at a deeper level. When those things are purified, naturally we will start seeing कि हमारी जो external reality है, that has also started shifting and changing, right? So let's suppose my belief system before was that I'm unworthy, right? Now, if that is my belief system inside, I am going to attract all sorts of people in my reality who are going to make me feel unworthy. और गलती से किसी ने worthy feel करा भी दिया ना. So there's this lady I was watching from some time back. It's one of our friends' wife, and she thinks that she has to live at the mercy of her husband and other people and all that, right? Having low self-worth. So गलती से अगर कोई उनका ध्यान रख भी देना या फिर उनके लिए कुछ अच्छा कर भी दे, she would be like नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो. क्योंकि हमारा, अगर हम अपने बारे में ही अच्छा नहीं सोचते हैं, तो कोई और जब हमारे लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है तो हम उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, राइट? सो दैट वे वी विल बी क्रिएटिंग our reality on a continuous basis. So now the thing is, if we want people to love us, if we want people to make us feel worthy, we need to love ourselves. We need to rewire this entire thing where we feel worthy, we feel loved enough, we feel confident enough inside, right? Inside. तो इस पूरी साइकी को
समझने की जरूरत है। अब इसको हमारा जो प्रोसेस होता है, नाउ देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज थ्रू विच यू कैन डू दिस, through affirmations, visualizations, meditations, journaling, and so on and so forth. It takes time, of course, and the way we do it, a lot of you already have done the 3 workshops. So अगर हम उसमें parallel draw करें, and why we keep telling those of you who have already done at least the first 3 level of healing journeys, तो उसमें हम ये बोलते हैं कि ये iterative process है, ये आपको बार बार करना पड़ेगा, because your subconscious is way more stronger than you think. और जो एनर्जी होती है, द एनर्जी एक पैटर्न में, एक रिदम में, एक साइकिल में फ्लो होती है, तो उसका फ्लो करने का जहां हैबिट है वो अपने आप वहां फ्लो करने लगती है. व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज न्यूरोप्लास्टिसिटी. We are trying to change a completely dark, deeper part of ourselves. और इतने सालों से, अगर 30 साल से, let's suppose I talk about myself, from more than 3 decades, I have created a certain kind of belief system, and I'm trying to change my entire identity and create something which is more real, which is closer to my true self, my what I am here to do. Then that energy needs to be taken to be, you know, diverted in that direction, not once, not twice, maybe many a times. Maybe for some areas it would happen just in once, maybe for some areas it would happen in 2 times, 3 times, 4 times. Maybe your subconscious needs has become so rigid, has become so fearful that it needs to listen to the message over and over and over again. There are so many childhood splits that I have personally worked with till now. Many of them heard my language very easily, but there were many of my childhood splits which were very afraid. उनको बहुत डर लग रहा था, उनको क्लोजेट से बाहर निकलने में बहुत डर लग रहा था, right? They have been told bad things, miserable things, right? And no child is supposed to go through that thing, but now the thing is कि वो तो हो गया, अभी जो होना था हो गया, that accident has happened, right? Whatever. But now, as an adult, it's my 100% my ownership and responsibility कि मेरा जो circle of influence है मेरी life का, that is 100% my ownership and responsibility, right? And we don't complain about things which are not in our control, राइट? ऐसा हमें लगता है कि बहुत सारे लोग उन चीजों के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं जो विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल. यू विल एक्चुअली ऑब्जर्व दैट वी कंप्लेन अबाउट थिंग्स विच आर एक्चुअली इन आवर कंट्रोल. हम ऐसे नहीं कंप्लेन करते ना कि हवा ऐसे क्यों चल रही है, पानी ऐसे क्यों गिर रहा है, ग्रेविटी ऐसे क्यों चलती है, नेचुरल लॉज ऐसे क्यों है, बिकॉज वी नो दैट देयर इज नथिंग दैट वी कैन डू अबाउट दैम, राइट? So हमारा जो circle of influence है, that needs to be worked upon. Maybe there will be some of your splits which would require more assurance, more love, more compassion, more of integration work, right? So that's why we say कि healing mind blocks तब तक करना है, जितने भी लोगों ने यहाँ पे किया है, जब तक वो आपका natural habit ना बन जाए, जब तक it doesn't become really fluid and flexible and easy for you to close your eyes and then have a conversation with your split, with your inner child, with whichever part of you need to work with. तो वो जिस दिन आप इस confidence में आ जाओगे कि you're able to tap into your inner self, your subconscious, and you are able to give the message. Let's suppose कोई एक ऐसे आपने ऑब्जर्व किया कि एक नेगेटिव थॉट पैटर्न चल रहा है, आपकी ऑब्जर्वेशन में आया, यू रियलाइज कि ओहो, ये सोचती हूँ मैं, ये फील करती हूँ मैं. You write it down, elaborate it, find the answer, कहाँ से आया, क्यों आया, sit into the process, close your eyes, go deeper, go into a silent zone, calm yourself down, communicate to your inner child. ये इतना fast process होना चाहिए over a period of time, right? That kind of a relationship that we need to develop for ourselves, because everything that we have in our life externally is nothing but a reflection of who we are inside. There's nobody that owes us anything, nobody that we can blame it on for nothing doing, right? So that's how our belief systems shape our self-worth, our self-esteem issues. And of course, there are plenty of things that we, tools and techniques and
practices and rituals, everything that you can follow. Plenty of things, a lot of things are available on internet. आपको जो suitable लगे, you can start bringing it into your practice. You can adapt it, you can try it, what works for you, you can keep it, what doesn't work for you, leave it. But ये process जो है, what I'm defining right now, process तो यही है, right? I'm not saying this is the only process to tap into your subconscious mind, to tap into the deeper part of you. This may not be the only process to do that, but the whole point is that you need to tap into your core circle of influence, right? And reshape that. Once you reshape that and start taking actions outside accordingly, जैसे ही पहली चीज तो हम वो reshape करते हैं, हमारे actions already change होने लग जाते हैं. But when I start feeling that I deserve all of these things, right? So when you were born as a child, as a मतलब रोते रोते हम पैदा हुए थे, हम सब रो रहे थे, हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे. एक छोटा बच्चा होता है, उसको कुछ चाहिए होता है, वो तो दिल खोल के रोता है. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचेगा उसके बारे में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. He is so easy to ask, right? So क्यों वो इतनी easily मांग पाता है? Because we were all born worthy. We all knew that we all deserve things. We all deserve to be loved. We all deserve to be accepted. We all deserve to have all of these things, right? So हम अपनी लाइफ में एक्शंस इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि ये करके भी क्या होगा. I don't deserve it anyway because someday somebody told you that you don't deserve it. You're not good enough, right? तो हम एक्शंस इसलिए नहीं लगते हैं. The moment we come to this realization that I'm already worthy, I'm already loved, I am unconditionally loved. So that day, nothing can stop us from taking the actions, required actions to achieve whatever we wish to achieve in our lives. और अगर किसी को ये क्वेश्चंस आ रहा है बट फिर भी एक्शंस तो लेने ही पड़ेंगे ना, क्या मतलब हुआ, ये हो गया तो वो हो गया तो क्या हुआ ये वो, दैट मीन्स यू हैव स्टिल नॉट गॉट इट, राइट? क्योंकि जब हम इस पॉइंट पे आते हैं where we start feeling that I deserve it, actions are actually not a problem. Actions are fun. Actions are something that we enjoy doing, love doing, right? Because that is an expression of who we are. That is an expression of our self-worth. There's no other way to express ourselves in this world out, right? Not, we don't become couch potatoes. तो जो लोग couch potatoes बन जाते हैं और बोलते हैं लाइफ में ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, and I say that I deserve it, no, that means the message has still not gotten absorbed deep within. जिस दिन वो हो जाता है, the self-worth is not into question, the actions are not into question, right? So yeah, that's what I wanted to say, and this is how I also worked on myself. ये सारी चीजें जो मैंने आपसे शेयर की, when I was feeling कि ये सब करके क्या होगा and all that, I came, और मुझे एक और बिलीफ सिस्टम था मेरा जिसमें मुझे ये लगता था आई एम नॉट केपेबल इनफ, मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे बचपन से ये बोला गया कि तुम सब गड़बड़ कर देती हो, यू आर मेसी, यू आर क्लमजी, यू डोंट यू विल मेक अ मिस्टेक, यू विल नॉट डू थिंग्स इन द राइट वे, तुम सही नहीं कर पाओगी, तुम नहीं कर पाओगी, राइट? दैट वाज माय बिलीफ सिस्टम समवेयर डीप इनसाइड कि मैं नहीं कर पाऊंगी, राइट? एंड आई हैड टू make a positive shift and change the entire story that I can handle it, I can do it, right? So first inside shift lana hai, and the fears are not going to go away, but you have the fears, you know. I was watching that movie I shared with a Karma, Princess Diaries, and there's a very beautiful line in that movie which says that, you know, the father writes to the daughter and he says that, Amelia, courage is not the absence of fear, but it simply means that, but courage is simply a judgment that there's something else which is bigger than this fear. So fears will not go away, but you will come to a point where you'll say that I'll just do it. I'm just gonna do it, right? Because I know that I deserve it and I'm gonna have fun doing whatever comes on the way, right? I'll handle it. I'm capable to do it, right? So whatever things that you were told, whatever things you have in your belief system, identify those things, go through this process till the point where you have an entirely opposite statement in front of you,
where you can say that if you were previously saying I'm not capable, you're very confidently and without any resistance or discomfort, you can say that I love myself, right? And I'm love myself for whatever I am. It's not with conditions, it's without any conditions. And because I love myself unconditionally, that is why I'm going to do whatever I need to do, right? Because I love myself. Hmm? So yeah, that's how it went for me. Yeah. Anything you wish to add to that, Akarna? No, nothing. Yeah. That's very Does that beautifully help, covered, Lata? Anamika. Yes, yes, Anamika. So that's very beautifully covered and addressed all the concerns. Thank you both, for all the guidance. Thank you. Thank you for opening up, Lata. That was very helpful from your side. Anybody else wants to say anything? Thank you, Anamika. Yeah, thank you. ठीक है. So we will wrap up this call then, and we will see you guys for the a different topic. The next topic is going to be probably letting go of the past. So we will meet you guys then. Thank you so much for joining, everyone. Have a great evening. Thank you. Thanks. Bye. Take care. Thank Bye you. bye. Tata. Bye bye.